1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा क्या? 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? One election, multiple ambitions. जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ, शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहार वासियों को अपमानित किया। The Bihar elections are not just a clash of ideologies, but of personalities as well. और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। इनको तड़ी पार कराएंगे बिहार से। Unlikely alliances have been sealed, friends have become enemies, enemies have become friends. Those on the political sidelines could well become kingmakers. 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, 2002 में गुजरात में जो हुआ उसको भूल गए क्या? With Nitish Kumar, Lalu Yadav, Sushil Modi, all products of the Jayaprakash Narayan movement dominating the narrative, this election is set to be a high decibel contest with an exciting finish. रोजाना जंगल राज का डर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। इन लोगों का तो काम ही है, इसलिए तो हमने नाम दे दिया कि बड़का झूठा पार्टी। In this episode of the Reporters Project, Maria and I are travelling to the homes and constituencies of the 4 major players in the race in the hope of understanding their politics and picking up sights, sounds and ideas that could well shape the Bihar verdict come November 8th. A look at Patna skyline and we know it's a bipolar contest. Nitish Kumar is the central theme of this election. Bihar's Vikas Purush, often known as the silent Bihari today, is both the challenger and defender. आया तो बार बार संदेशा अमीर का, हमसे मगर हो न सका सौदा जमीर का। It was a bitter divorce as Nitish Kumar walked out of his 17-year-old marriage with the BJP in 2013 and went straight into the arms of his enemy number 1, Lalu Prasad Yadav. The reason was this man, Narendra Modi, who the BJP had chosen to lead their 2014 campaign. A break with the NDA didn't really work out for Nitish. The Modi wave swept the 2014 polls, winning 31 out of 40 seats in Bihar. The JDU ended with just 2. बिहार में अगर चल रहा है तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। Faced with this stunning defeat, Nitish Kumar quit the chief minister's chair and installed Jitan Ram Manjhi, a Mahadalit, to head the state. Jitan Ram Manjhi सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि That didn't work out very well either. The protege turned on the mentor, and after 8 months of power struggle and much political drama, Manjhi was forced to step down. जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। हम अपना स्वाभिमान के अनुसार आज काम करने लगे तो उनको पेट में दर्द होने लगा। Nitish Kumar's carefully crafted social engineering is now under threat from this very man, whose alliance with the NDA is fast becoming a headache. And then there was the DNA war of words, which saw Nitish invoking Bihari Asmita to counter Narendra Modi. जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हमारे डीएनए के सवाल को छेड़ा था, कहा था कि डीएनए में गड़बड़, बिहार वासियों को अपमानित किया था। Kalyan Biga remembers its prodigal son with fondness. After all, Nitish Kumar gave them the status of a VVIP village with bijli, pani, sadak and a shooting range thrown in as well. Anjali and Kajal, both national level shooters, are thankful for it but have a complaint as well. जो भी है जो कल्याण बीघा में ही बन रहा है, हम सबके गांव में भी बनना चाहिए, इतना दूर से मेहनत करके आना पड़ता है। Barely 100 meters away from the shooting range in Kalyan Biga is Nitish Kumar's ancestral home. कैसा दिन गुजरता है आपका सुबह से लेकर शाम तक? It's the only home in the village without electricity.
तो आपके घर में बिजली नहीं है? जी नहीं। क्या बोला था उन्होंने? कहीं कि समूचा बिहार में अभी फैला नहीं है बिजली, समूचा बिहार में फैल जाएगा तब जैसे आप लगा सकते हैं। 66-year-old Sitaram has been the caretaker of this house for 50 years and the first person Nitish meets when he visits Kalyan Bigha. सीताराम कने in Bakhtiarpur, my house is located on, road itself that became national highway later on. So all the leaders passing through that area used to have a stop there. So I had experience of listening to so many people there, listening to their conversation. That is different thing, but I was never attracted to Congress party. Nitish Kumar Jindabad, Lalu Yadav Jindabad, Mahagathbandhan Jindabad. Ironically, the Mahagathbandhan that he now leads has the Congress as an alliance partner along with the RJD. So are his new friends bothering his old neighbors? नीतीश जी अपना मन में जो चाहेंगे वही करेंगे। लालू जी दबाव में इनसे कोई काम नहीं करा सकते हैं। जिस दिन इनको लग जाएगा कि हम दबाव में चल रहे उस दिन ही रिजाइन कर देंगे। Son of an Ayurvedic doctor and a trained electrical engineer himself, Nitish Kumar started his politics with the anti-Indira Gandhi movement led by Jai Prakash Narayan in the 70s. It was modern Bihar's golden period, says Lalu Prasad Singh, a guide at the 5th century seat of learning, Nalanda. कमल का फूल खिलेगा तो ज्ञान बढ़ेगा। कमल का फूल खिलेगा तब ना। Like the ruins of Nalanda University, the state of education in Bihar is also in ruins, he laments. आज़ादी होने के बाद किसी भी सरकार ने, आइदर कांग्रेस का सरकार हो या किसी भी सरकार हो, लोगों को पढ़ने के तरफ, पढ़ाने के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि अगर लोग पढ़ जाते तो शासन करने की जो पद्धति थी, सेटअप था, उसको चेंज करना पड़ता। Yadunandan is a Bhumihar and his fellow guides Shiv Priya Kumar and Praveen Kumar are all from the upper caste. 5 minutes into the conversation, the inherent caste lines of Bihar's politics comes to the surface. एक्चुअली यहाँ पर अपर कास्ट का कुछ है ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और ये नालंदा जिला जो है पूरा कुर्मी स्थान है और कुर्मी जाति का ही बोलबाला है यहाँ पे। एक्चुअली उनको क्या बहुत घमंड हो गया और वो बीजेपी को छोड़ दिए। फिर दूसरा क्या हुआ कि वो लालू जी का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, जबकि लालू जी खुद बदनाम हैं। जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। ये लड़ाई है बैकवर्ड फॉरवर्ड। उठाओ दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों। Caste is a complex business and no one understands it better than Lalu Prasad Yadav. Even in defeat, his vote share has averaged 19%. 64% Muslims voted for him in the 2014 elections. Perhaps why we saw a blistering attack on the RJD chief's beef gaffe by the Prime Minister. खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? It wasn't the first time we saw the two spar. But what took the internet by storm was this hilarious mimicry act. आके यहाँ बोलते पैकेज दिया। क्या बोले थे? बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो, 1.25 लाख करोड़ रुपये का पैकेज।
बिजली आई, बिजली मिली तो मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। क्या यहाँ पर भी हंसी मजाक लगा के रखते हैं या? उनकी भाषा ही मजाकिया भाषा है और सब लोग उनकी भाषा सुनने के लिए काफी भीड़ लगाते हैं। Lalu Prasad Yadav has many defenders in his village Fulvaria. सिंगल लेमैन जो 2 विधायक और 2-3 MP लेकर के और लोकसभा में गरजता है, उस जीवट का नेता कहाँ है पूरे हिंदुस्तान में? The fodder scam is dismissed as a conspiracy and his 2 sons contesting these elections is accepted as a birthright. श्री लालू प्रसाद यादव जी के लड़का तेजस्वी यादव जी मतलब राजनीति में उस दिन से हम लोग और हौसला बुलंद हो गया कि आगे पीढ़ी भी चलने वाली। लेकिन ये तो परिवारवाद हुआ ना? नहीं, आप बताइए कहाँ परिवारवाद नहीं है? कांग्रेस के साथ परिवारवाद है, भाजपा के साथ परिवारवाद है, कहाँ परिवारवाद नहीं है? हर जगह है। कोई भी चाहेगा कि मैं अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर ही बने। अगर लालू राजद का ज्यादा सीट आता है तो मेरे विचार से राबड़ी जी को बनाना चाहिए या तेजस्वी को बनाया जाए। Rabri Devi has already registered her name in Bihar's political history when she was dragged out of her kitchen one day in 1997 and sworn in as the chief minister. This after her husband's arrest in the fodder scam became inevitable. The Lalu Rabri regime between 1990 and 2005 is often referred to as Jungle Raj. But here in Pulvaria, that fear is disregarded as BJP propaganda. पहले तो ये देखना चाहिए कि जंगल राज था कहाँ। बरसों लोग जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे, पिछड़े हुए थे, उनको लालू जी ने जगाया। हक और हुकूक के लिए वो लड़ना सीखे, उसको जंगल राज नाम दिया गया। The son of a cowherd, Lalu grew up desperately poor in this house in Fulvaria. His mother had to rely on a small piece of land and 2 cows to bring up her 7 children. जूता चप्पल नहीं, कपड़ा के हाफ पैंट और स्काई रंग का हाफ शर्ट ये था, वो भी डबल नहीं था, सिंगल ही था। Today, Fulvaria has a referral hospital named after his mother, a power station, a helipad, even a railway station that was built when Lalu took over the Indian Railways in 2004 and put it back on track. Waiting for the only train that passes through Fulvaria, Ashraf Ali says the station is a waste of money. Lalu should have built some industry instead that would have given employment to educated young men like him. या नौकरी होगी तो होगी, नहीं तो विदेश में चले जाऊंगा। Driven by his desperation, Ashraf is striking a note very different from the 17% Muslims in the state who have traditionally backed the RJD. श्री लालू प्रसाद जो रोजगार दिए हैं अपने यादव परिवार के दिए हैं, यादव जाति के हैं। तो एज अ यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास नौकरी नहीं है, क्या आपके लिए वो ऑप्शन है जब आप जाएंगे वोट करने? अगर हमको रोजगार भाजपा दे तो भाजपा क्यों ही देगा। 60 kilometers away in Chhapra, the Lok Sabha constituency from where Lalu Prasad Yadav started his political career in 1977, Munna Sir's English coaching class is underway. Autocracy, plutocracy. Their former MP took great pride in playing the rustic leader to the hilt, often regaling Parliament with his attempts to speak the language. I can translate it in English also. I did not want to waste the time. I will explain later on. Mr. Lalu Prasad Yadav, actually he is a genius. He is the original practitioner of Chanakya Niti in Chanakya's land, the wily politician who's made Bihar almost synonymous with his name.
Lalu Prasad Yadav, convicted in the fodder scam, may not be in the running for the top job, but he's certainly hoping to be the kingmaker in the coming days. If he fails, his current state of oblivion will stretch further. But as always is the case with the joker in the pack, when it comes to Lalu, be ready to be surprised. Coming up next, what mountain man Dashrath Manjhi's village is saying about Jitan Ram Manjhi. In Bihar's Gaya district, every child knows the incredible story of Dashrath Manjhi, the landless farmer who chiseled through a mountain for 22 years to bring medical care closer to his village. Barely 60 kilometers away is the village of the other famous Manjhi, Jitan Ram, who became the first Mahadalit Chief Minister of Bihar after Nitish Kumar quit following his humiliating performance in 2014. The masterstroke that was executed to woo back the backward castes backfired for the JDU and for Nitish Kumar. हम अपना स्वाभिमान के अनुसार आज काम करने लगे तो उनको पेट में दर्द होने लगा। मांझी जी को बनाए, अरे नहीं बनाते तो कोई जानता जी। बनाने के बाद चले गए बीजेपी के 60 गांठ में, तो हटाते नहीं तो उनको क्या सिर पर बिठाए रखते। Manjhi rebelled, joining hands with the BJP and managing 20 seats for his newly formed party, Hindustan Awam Morcha. Manjhi is very important to the whole dynamics of the caste broadening of the base of the NDA is concerned. But the importance of being Manjhi is lost in his own village Makhar that is still waiting for a teacher in this newly constructed school. In the village next door that also falls under Manjhi's constituency Magdumpur, people are waiting for their MLA to deliver on another front, electricity. कौन बोला था कि बिजली देगा? जीतन राम जी मंत्री जी बोले थे सर, मंत्री बनने के पहले तो हम लोग याद दिलाए, मेरे के यहाँ गए हैं सर कि इनकी याद है, ठीक है 4 महीने के बाद हम गड़वा देते हैं। गड़ गया लेकिन 6 महीना गड़ला हो गया, अभी तक आ नहीं सका सर। Manjhi, a member of the Musahar or mouse-eating community, may not have delivered but has played his role well. He has the Dalit sympathy, but does he have their vote? जीतन राम मांझी के साथ पॉलिटिक्स किया गया है। अगर मांझी जी समझते हैं अपने आप को कि हम महादलित के नेता हैं, तो उनको ये सोचना ही गलत है। दलित का नेता अभी तक बिहार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। Back at Dashrath Manjhi's village, there is little expectation from their Jad Bhai. Dashrath's family still lives in this dilapidated house, and whatever work the village has seen is courtesy Nitish Kumar, not Jitan Ram Manjhi. जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढकों की तरह टटराने लगते हैं, घूमने फिरने लगते हैं और बाकी 5 साल कहाँ रहते इसका कोई ठिकाना नहीं है। It is hard to miss the poster war in Patna. It's a direct battle between Nitish Kumar and Narendra Modi. The other Modi, Sushil Kumar, is nowhere to be seen, at least on hoardings. Not be the poster boy of the BJP, but for the first time in his 4-decade-long career, Sushil Kumar Modi has a real shot at the Chief Minister's chair. Sushil Kumar Modi, a fellow traveller of Nitish and Lalu in the JP movement, was always seen as the facilitator, not the face of the BJP in Bihar. Someone who played second fiddle to Nitish Kumar, the senior partner in the NDA alliance. But that changed in the 2010 Assembly election when Modi hit a strike rate of 90%, winning 91 out of the 102 seats the BJP contested. At his residence in Patna's Rajendra Nagar, there are no election banners or posters. क्षेत्र में उन्हें बचपन से घूमता हुआ देख रहा हूँ। बहुत कम नेता ऐसे हैं जिन्हें चुनाव के अलावा भी क्षेत्र में घूमते हुए देखता हूँ। Sushil Kumar Modi has been a 3-time MLA from here in Patna Central and has shown absolutely no signs of ambition to go national. At the local BJP office near his home,
Sumo is regarded with respect, but there is no doubt that it is Namo who is their general. लेकिन मोदी जी का स्ट्रेटजी ये सीनियर मोदी का कि हमारे नाम पे चुनाव लड़ा जाए, बाद में हम जिसको चाहेंगे उसको सीएम बनाएंगे। Married to a Roman Catholic and seen as a liberal secular face so far, Sushil Modi today has little choice but to follow the party's line. बिहार में हम लोग की सरकार बनेगी, हम गोवध बंदी का कानून लाएंगे। The defender, the challenger, the rebel, the joker in the pack. 2015 is an acid test for all four. And for the man at the center of this election, a win or loss will mean much more than whether or not his party rules Bihar.